Welcome to Coachify Live, dear students. I am Dr. Samit Razad, your VARC mentor. Um, I have a PhD in English, total experience of about 22 plus years at school, college level, and also have been teaching to various competitive exams. I welcome you to this class where we are going to go through some good reads for a great career. Students, it so happens that mastering verbal ability and reading comprehension for competitive exams such as CAT or CLAT or IPMAT or the likes, one most important factor is to master the art of reading and then understanding it well. Okay, you understand it very well. Those who've been preparing for a while by now have come to understand this. Those who are going to be preparing will need to know this. So here we are, here I am at your service to share my experience with you, which I have acquired over the last 2 decades, as I said. We are going to start with readings that are most essential, that are unavoidable, that are inevitable. Then we are going to go to readings wherein you're going to have a certain amount of choice to choose from, and then you'll see as to how it helps you. So students, the most important thing for mastering verbal ability and reading comprehension, for preparing for the with the point of view of an exam, is the reading comprehension exercise, and this is something that begins with no prizes for guessing, newspaper reading. All right, now I am sure that this is nothing extraordinary that I am telling you right now at this moment. If you've been seeking guidance, if you've been under somebody's tutelage or guidance, you know that newspaper reading is most essential for beginning the preparation. But let us understand why. Before what, let us understand why. Once you have the why in place, the what is not going to be a problem. I'm saying it because usually students find it, number one, cumbersome, number two, boring, number three, time taking, an activity to read the newspaper. But it's unavoidable. Like I said, it is most essential. What all do you gain when you read the newspaper? Which newspapers to read is secondary, we are going to come to that, but then what all do you gain when you read the newspaper? Students, have you ever realized that so far as the reading material or literature text for study material is concerned, it is available in plenty. It is available both offline and online. It is available very cheaply at a very nominal rate. But why is it not as effective as it claims to be? ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारा रीडिंग मटेरियल आप लोगों को, बहुत सारा स्टडी मटेरियल ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बहुत सस्ते में उपलब्ध है, लेकिन फिर भी उसका वो परिणाम नहीं निकलता, उसका वो रिजल्ट नहीं निकलता जो आप सोच के बैठते इच्छुक हैं. For example, we talk about vocabulary. Now, no student will deny that vocabulary is one of the easy parts, and it is available in a lexicon, a dictionary. So far as mastering vocabulary is concerned, you have the dictionary with you. All right, it is available, the finest of dictionaries at a very cheap rate. If you have a smartphone, you don't even need to go in for a print edition. But then what happens to you when it comes to effectively using the vocabulary or usage of vocabulary during the exam? What happens to you? Now, there are two important aspects. One is memory. The other is application. We are going to talk about these two in detail in times to come
when we introduce the importance of vocabulary to you. But you understand the meaning of memory, that is learning the words, creating a word bank, and the other part is application, then applying those words. All right. Now, I'll tell you what happens is you master this part. मेमोरी आप लोगों की बहुत अच्छी हो जाती है यदि आप मेहनत करते हैं, यदि आप परिश्रम से काम करते हैं, तो आप लोगों को बहुत सारे शब्द याद हो जाते हैं. यू हैव ए डिसेंट अमाउंट, ए डिसेंट नंबर ऑफ वर्ड्स इन योर मेमोरी बैंक. पर क्या आप उन शब्दों को इस्तेमाल कर पाते हैं? आर यू एबल टू यूज दोज वर्ड्स इन योर डेली लैंग्वेज, इन सेंटेंसेज, इन कंस्ट्रक्शन? क्या आपको उन शब्दों के अर्थ पता है? इस तरीके की चीज़ें डेफिनेटली नहीं मालूम या बहुत कम होगा. नाउ आई विल टेल यू what all does the newspaper help you with. What all does it help you with? So students, please remember that your exams are a combination of these two, speed and accuracy. If you have a very high speed but you lack accuracy, you're not going to crack the exam. If you are very accurate but lack the desired speed, you will again be not able to clear the exam. It has to be a decent mix of both. You have to have the required speed, which in competitive exams has to be very high. If the number of questions is less, then the difficulty level is very high, consuming a lot of your time per question. If the difficulty level is low, if it is an easy exam, then the number of questions are very high, again consuming your lot of time. So speed is extremely important, and so is accuracy, as I explained. When it comes to RCs or verbal ability, what does build your speed and accuracy? It's a mix of all three dimensions of English in competitive exams, which is reading comprehension, vocabulary, and grammar. All right. Coming back to where I started from, vocabulary. You find it difficult to apply those words, to recreate, to reproduce those words from your memory. It happens because of lack of practice. Now, how do you practice? So, 100 सवालों का एक जवाब, 100 तालों की एक चाबी. The master key to begin with is newspaper reading. I'll tell you why. देखिए, newspaper reading से वॉल्यूम मिलता है, बहुत सारा कुछ होता है पढ़ने का. ठीक है. एवरेज जो डेली न्यूज़पेपर्स होते हैं, जो मंडे टू फ्राइडे, तो कम से कम एनीवेयर बिटवीन 14 to 16 पेजेस, एंड द सप्लीमेंट्स एंड सैटरडे एंड संडे सप्लीमेंट्स आर एनीवेयर बिटवीन 20 to 30 पेजेस. So let's say about 14 to 16 pages. That's a lot in terms of reading. Okay, volume wise बहुत ज़्यादा है वो बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए है. जब आप नियमित रूप से अखबार पढ़ते हैं, when you read the newspaper very regularly, your speed builds. You know why? I just told you because you're reading a large volume. ठीक है. Normally competitive exams you get passages which are between 250 to 300 words. And you get 5 to 6 such passages, whether you talk about CLAT or you talk about CAT or IPMAT. So this is so far to date, this is the pattern. It might change, you never know, but then not likely to. And we are going to go with what has been happening. तो 5-6 passages आपके पास आते हैं. At the max आपके पास अगर 6 passages भी हैं, 300 words भी हैं, so what you have is about 2000 words, maybe less, 1800 words to read in an exam, which is nothing. Why? Because newspaper में शायद 4 पेज 3 पेज में 1800 वर्ड से ज़्यादा आप पढ़ चुके होंगे. If you read the newspaper, the editorial part dedicatedly, it constitutes about more than this, maybe 3 to 5,000 words. So if you read the newspaper every single day religiously, regularly, speed gets built automatically. All right. Now I'll come to this part, vocabulary. मैंने शुरू में इसके बारे में बात की थी. देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है कि शब्दों की संख्या कोई खास बात नहीं है. मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा, डिक्शनरी सबके पास होती है, ऑनलाइन सब कुछ, सारा मटेरियल अवेलेबल है. चीज़ों को याद रखना, मेमोराइज करना कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन उनको इफेक्टिवली यूज़ कर पाना, नंबर 1. नंबर 2,
if they are there used in a text to be able to relate them, to bring them out of your memory box, ये दो चीजें बड़ी मुश्किल हैं. Newspapers help you. Why? Because each newspaper has a certain frame, has a certain level of vocabulary. इससे और इसके बीच में एक अंदाजन डिफिकल्टी लेवल होता है, जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, द टाइप्स ऑफ वर्ड्स दैट आर यूज्ड, वो दैट हैज ए सर्टेन पैटर्न. एंड व्हाई डज इट हैव अ पैटर्न? Because the regular writers in the newspapers have a certain style of writing. All of us have, you also have, I also have. If I sit down to write, and if somebody knows me well, he or she will be able to jolly well figure out that the piece has been written by me. Similarly, the way we have style of speaking, and so we also have style of writing. तो जो न्यूज़पेपर्स में रेगुलर राइटर्स होते हैं, उनका एक पैटर्न होता है, उनका एक सर्टन स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है, एंड सर्टन types of words are used by them. So number one, you get acquainted. आपका उन शब्दों से परिचय होता है, आप उन शब्दों को पहचानते हैं, और फिर वाक्य विन्यास, इन कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस, आपको उनका प्रयोग करना आता है. You learn to use those words. Okay. Compare it with any other normal activity like driving or cooking, or for that matter practicing mathematics. How do you master the art? गाड़ी चलाने के बेसिक्स एक होते हैं, लेकिन जब आप उसको सड़क पर लेकर निकलते हैं, you do well. And it's only by virtue of practice that you become an expert driver. Same happens in cooking, that by virtue of practice you become an expert cook. And maths also. You have a formula, you practice 100 sums, you practice 1000 sums, you master that formula. So अंग्रेजी में क्या होता है कि आप लोगों के पास इन शब्दों को यूज करने, you don't get questions as such. You don't get questions like fill in the blanks or make sentences with. So how else do you use them? So you use them in reading. और जब आप बार बार एक चीज को पढ़ते हैं, तो वो चीज आपके याददाश्त में ठहर जाती है. You register it in the memory bank. So the most important thing, or let's say one of the most important things, is that you learn to apply those words. Now you are not just memorizing them, but also learning how to use them. एप्लीकेशन का सीधा सा मतलब है कि आप इन शब्दों का प्रयोग किस तरीके से करें, लिखने में या बोलने में. Once you are into the habit of reading those words, you tend to use them also. बोलते करते आप उनको प्रयोग करने लगते हैं, और जो वोकैबुलरी बैंक आपने इकट्ठा किया है, वो वोकैबुलरी बैंक आप लोगों के लिए अब इफेक्टिव हो जाता है. That means it becomes easy for you to use those words. So the most important, one of the most important things, like I said, speed and accuracy. So firstly we talked about speed. जब आप न्यूज़पेपर बहुत रेगुलरली पढ़ते हैं, तो स्पीड आपकी बिल्ड होने लगती है. मेमोरी और एप्लीकेशन वाला पार्ट जब इसमें आने लगता है. अब ग्रामर, ठीक है, व्याकरण. अगर आप लोगों को बचपन में पढ़ी हुई व्याकरण की परिभाषा याद है, इफ यू रिमेंबर द डेफिनेशन दैट वी ऑल हैड लर्न्ड ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को नियमों में बांधता है. ग्रामर इज द साइंस ऑफ लैंग्वेज. ऑलराइट, इट हेल्प्स अस इन नंबर वन कंस्ट्रक्शन, एंड नंबर टू यूसेज, द करेक्ट यूसेज. अगेन, you do not get questions directly on grammar, but it is extremely important. All right, it's like a system working. जैसे मैंने आपको गाड़ी का एग्जांपल दिया, वैसे मैं आपको शरीर का उदाहरण देता हूं कि शरीर के किसी भी हिस्से में यदि कहीं भी किसी भी तरीके की कोई खराबी है या कष्ट है, तो पूरा शरीर सुचारू रूप से काम नहीं कर सकता, वांछित परिणाम नहीं आएंगे. You will not get the desired results. Exactly same happens in case of a language. Now language is a system, presuming so. Then grammar, vocabulary and understanding. There are 4 components: read, write, speak and comprehend, which is to understand. वो उसके components हैं. इनमें से कोई भी एक सिस्टम यदि प्लेस में नहीं है, तो वो पूरी तरह से अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा. The language usage or understanding will not be very effective. So newspapers, you will not find mistakes. You will find appropriate usage of grammar. You will find sentence construction in a manner that ought to be, that must be. तो आप लोगों की ग्रामर पे ज़बरदस्त पकड़ जो है वो बनती है. ठीक है,
अब आप देखें, आप लोगों को सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का आर्ट आता है, यू मास्टर द आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ओके, यू लर्न टू राइट। सो आप देखिए कि स्पीड हो जाती है, वोकैबुलरी हो जाती है, ग्रामर हो जाती है। जब आप निरंतर पढ़ते रहते हैं, when you are constantly into the habit of reading, when you are regular with reading, when you do not miss out on the important aspect of reading, तो आप ये देखते हैं कि आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग का लेवल भी बढ़ता है, ठीक है। सो 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स, नेमली स्पीड, ग्रामर, vocabulary and understanding, which is your RC passages in not any particular order. Therefore, 4 of these are equally important. Now, another very important aspect that the newspapers cover, your GK, general knowledge. I am not a GK teacher, yet it is my duty to inform you of all the possible benefits that a particular activity is going to be providing you with. आप लोगों को मालूम है कि करंट अफेयर्स जो है, ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या तो डायरेक्टली रिटन टेस्ट में जीके टेस्ट करते हैं, अदरवाइज ड्यूरिंग योर ग्रुप डिस्कशंस, पर्सनल इंटरव्यूज एंड वैट्स, राइटिंग एबिलिटी टेस्ट, रिटन एबिलिटी टेस्ट जो होते हैं, उसमें जीके आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम आती है। सपोज यू गेट अ टॉपिक which is dealing with the current situation in the country or the world. It is related to diplomacy, related to religion or politics or economy or environment or any other such topic. It would be really difficult for you to gather facts at the last moment. You may not even be able to recall most of what you've gathered if it is a short-term memory. But if you've been following topics, if you've been reading things very regularly, तो आप लोगों को वो चीज़ें बहुत अच्छे से याद रहेंगी, उनके प्रति आपकी संवेदनशीलता, यू विल बी सेंसिटिव टुवर्ड्स देम, यू विल बी मेमोराइजिंग देम, यू दे विल कम टू यू वेरी इजीली, naturally they'll come to you. You'll not have to make an extra effort to memorize them, all right, because it's very difficult to memorize things beyond a point, particularly for qualifying a competitive exam. क्योंकि इतना कुछ होता है याद करने के लिए, ये तो खाली अंग्रेजी है और अंग्रेजी में भी आरसी का पार्ट है, ठीक है, जीके भी है और मैथमेटिक्स भी है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स भी हैं, क्रिटिकल रीजनिंग भी है। फॉर क्लैट स्टूडेंट्स इट इज़ लीगल एंड जीके, फॉर कैट इट इज़ लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर, सो यू नो इट्स अ गेटवे टू ए न्यू वर्ल्ड, ऑल न्यू वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए एक रास्ता सा खुलने जैसा है जीके। और ख़ास करके उसमें करंट अफेयर्स जो होते हैं, ये आप लोगों के यहाँ मास्टर होने लगते हैं। और उसके अलावा जब आप बहुत रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सो इट बिकम्स एन एक्टिविटी दैट स्टेज विथ यू ऑलमोस्ट ऑल योर लाइफ, थ्रू योर स्टूडेंट करियर, थ्रू योर एकेडमिक करियर, through your jobs, and it helps you. It always helps you to stay informed what is happening around you, what is happening in the world. So not just GK and current affairs, but in terms of opening your mind, आपका दिमाग खुलता है। Students, please remember that there is a difference between an open mind and an empty mind. You have to learn to progress from an empty mind to an open mind. An open mind is that which is open to ideas, learning, teaching, training, and everything else. Newspapers help you building speed, help you building vocabulary, help you building your GK, अंडरस्टैंडिंग का लेवल आपका बहुत अच्छा करते हैं और आप लोगों की ग्रामर स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये 5 शुरुआती, बट इफ यू नोटिस ये ऑल एनकम्पासिंग है, दीज आर कॉम्प्रिहेंसिव बेनिफिट्स, ठीक है। यदि आप इन 5 चीज़ों के ऊपर अपना अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, तो आपने बहुत हद तक, so far as BARC section is concerned, verbal ability and reading comprehension section is concerned, take it from me, and I speak on the basis of my experience of, like I said, 2 decades plus, that you have almost won the battle. युद्ध लगभग आप जीत चुके हैं
VARC सेक्शन का लगभग, पूरी तरह से नहीं, पूरी तरह से जीतने के लिए हमें कुछ और चीज़ें करनी पड़ेंगी, उन पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अखबार पढ़ना जो है, रीडिंग द न्यूज़पेपर इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। आप कहीं भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, if English is, you're being tested for English as a language, you will need to master that, the three dimensions, vocabulary, grammar, and comprehending ability. You will need desired speed, and you will also need करंट अफेयर्स, ठीक है, चाहे आप किसी भी लेवल पे परीक्षा करें तो ये आपकी बहुत सहायता करेगा। ना द ऑब्वियस, सो दिस इज वाई, क्यों न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, ये हमने वाई पढ़ लिया। अब हम सवाल करते हैं व्हाट, यानी कि कौन सा न्यूज़पेपर आप लोगों को पढ़ना चाहिए, ठीक है। ओके, सो स्टूडेंट्स with no special affinity and no prizes for guessing again, you know like I said, with no special affinity or no particular favoritism, these are the newspapers that I would advise. If the Hindu is available in your area, if you have access to the Hindu, very good. If not, the second should be the Indian Express. You could read either of these two. The third should be the Times of India. कई दफ़ा ऐसा होता है कुछ इलाकों में द हिंदू का सर्कुलेशन नहीं है, या मान लीजिए द इंडियन एक्सप्रेस का सर्कुलेशन नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन तीनों अखबारों में से आप कोई भी एक न्यूज़पेपर उठाकर पढ़ें, ठीक है। अब इससे पहले कि आप कहें, मैं आपके एक प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। बहुत बार विद्यार्थियों को यह असमंजस रहता है, ये समस्या रहती है, एंड आई अप्रिशिएट दिस, दे आर वेरी कैंडिड विद दिस, दे कम अप विद दिस कंप्लेंट कि सर ये अखबार पढ़ने में समय बहुत लगता है, समझ में नहीं आता है, बहुत बोरिंग भी है। सो पहले दो सवाल के समय लगता है और समझ में नहीं आता। आई कैन आंसर these two questions. So far as you find it boring, please don't take interest in it. It is a life-changing activity. All right. So there is nothing like boring or interesting. It's about your keen interest in it. जितनी रुचि के साथ आप पढ़ेंगे, इस उत्साह के साथ पढ़ें कि आप लोगों को सीखने के लिए कितना मिल रहा है, और इस उत्साह के साथ इस चीज को पढ़ें कि ये आपका जीवन बनाने वाला है। दिस इज गोइंग टू ब्रिंग अबाउट ए मेजर चेंज इन योर लाइफ। सी, योर करियर इज गोइंग टू बी ए मेजर पार्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। करियर आपकी पहचान होगी, आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी, तो जीवन आपका बहुत अच्छा चले, इसके लिए ये समझना, ये मानना बहुत ज़रूरी है कि यू हैव टू हैव अ वेरी साउंड करियर आप लोगों का। लाइक दैट्स व्हाई द टाइटल इज गुड रीड फॉर अ ग्रेट करियर। एक अच्छे, एक शानदार उभरते हुए करियर के लिए आप लोगों को मास्टर करना पड़ेगा। सो यू टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू रीड। पहले इन सवालों पर आते हैं। यू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, यस। If you're not used to reading the newspaper, then anywhere between 2.5 to 3 hours to begin with, only to begin with, शुरुआत में ऐसा लग सकता है। इसका 2.5 घंटा या 3 घंटा लगातार न्यूज़पेपर के साथ बैठना लगभग असंभव है, आई एडमिट, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन्स। इतनी कैपेसिटी नहीं होती। ऑल्सो इट्स अ विशियस साइकिल। इन द बिगनिंग आप लोगों को आइस ब्रेकिंग करनी ही पड़ती, आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको झिझक है, और उसमें आपको इतनी देर बैठना पड़ रहा है, तो ये इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर यू। बट देन देयर इज ए वे आउट। हाउ यू हैव टू डू इट इज, you have to give 30 minutes in probably 4 to 5 sessions. All right, what you do is you read the newspaper for about half an hour in the morning, sometime around lunch, then in the evening, then late in the night, or whenever you go off to bed. एक और चीज ध्यान रखिए, it is an academic activity, but do not include these 2 hours in your study time.
बिकॉज दिस इज नॉट हार्डकोर प्रेप. आप लोग इंस्टीट्यूट्स की या जो अपनी खुद की पढ़ाई करते हैं, अपने कॉलेजेस की, स्कूल की पढ़ाई करते हैं, उसमें इसको इंक्लूड नहीं करें, बिकॉज ये उसका हिस्सा नहीं है. ये आपकी ओवरऑल वेलबींग का हिस्सा है. यू आर ग्रूमिंग योर सेल्फ, सो यू नेवर इंक्लूड द ग्रूमिंग टाइम in if you play a sport, you don't include it in your academic activity. It is indeed an inevitable part of your growing, your development, but वो हार्डकोर पढ़ाई का हिस्सा नहीं है. ये हार्डकोर पढ़ाई का हिस्सा होते हुए भी इसे इस 2 या 2.5 घंटे को आप अपनी पढ़ाई में इंक्लूड नहीं करें. उससे दो चीज़ें होंगी. साइकोलॉजिकली आप बर्डन नहीं रहेंगे. सपोज यू स्टडी फॉर 8 hours a day and you read the newspaper for 2 hours, you'll not be burdened with the idea that you have to study for 10 hours. On the contrary, इसे आप एक फ्री टाइम एक्टिविटी की तरह लें. आप इसको इस तरीके से लें कि माने ऐसा लग रहा है कि आप जब पढ़ के थक चुके हैं दिमागी रूप से, या आपको एक ब्रेक चाहिए, यू वांट टू अनवाइंड योरसेल्फ, you begin with the newspaper. That's how you do it, okay? Now you divide it into 5 sessions of 20 minutes or 4 sessions of 30 minutes or whatever is convenient to you to. But क्योंकि 20 से 25 मिनट का कंसंट्रेशन स्पैन बहुत आसानी से हम लोगों को मिल जाता है, 45 मिनट्स इज आइडियल. दैट इज वाई नॉर्मली जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जो पीरियड्स होते हैं वो 40 to 45 मिनट्स के होते हैं नॉर्मली. इट्स साइंटिफिकली प्रूवन. सो हम लोग आधे आधे घंटे के 4 या 5 टुकड़ों में न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं. सबसे पहली चीज़ ये हो जाती है. अब हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे? व्हाट, ये हो गया. नाउ कम्स हाउ. सो हाउ में एक तो आप लोगों का टाइम आ गया कि आप इसको आधे आधे घंटे या 20 मिनट के 5 फेजेस में पढ़ेंगे. What else are you going to do? Please mark my words, you will have to learn to sit down with a dictionary and with a lot of patience. These are 2 things that you will need. एक तो डिक्शनरी आपको लेनी पड़ेगी और दूसरा बहुत सारा धैर्य के साथ आपको बैठना पड़ेगा. You're going to read a particular and you're going to start from the front page. Students often come to me saying, sir, we've been reading the editorial page very regularly. It's been 6 months or 3 months or 4 months, yet we've not achieved the desired level of improvement. Students, this is mathematics. Suppose a newspaper has 14 pages or 16 pages, whatever. If you're reading one page, you're reading about 7 to 8% of it. That's it. So 7 to 8% improvement. If you're reading half of it, 7 pages, that means 50% improvement. ये mathematical है. आप लोगों को किसी भी चीज़ को अंडरमाइन नहीं करना. आप लोगों को किसी भी चीज़ को अपनी समझ में कम इंपॉर्टेंट नहीं समझना. द फ्रंट पेज इज इंपॉर्टेंट, so is the page of economy, so is the page of sports, so is the page of editorial. Okay, yes, you could jolly well leave the local news और इस तरीके की खबरें आप छोड़ सकते हैं, but make sure that you read the entire newspaper. That is the first condition, which is why it is going to take you 2 to 3 hours. Reading one page doesn't take more than 20-25 minutes. Okay. Now, major part जो होता है उसमें एडवर्ट्स होते हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी न्यूज़ होती है, कॉलम न्यूज़ होती है, छोटी मोटी खबरें होती हैं, देश की नहीं, दुनिया की नहीं, मोहल्ले गली की खबरें होती हैं, आपके शहर की खबरें होती हैं. वो आप छोड़ सकते हैं, पर आपको पूरा का पूरा अखबार पढ़ना ही होगा. जितने पेज छोड़ेंगे उतने परसेंटेज इंप्रूवमेंट कम हो जाएगा. ये बहुत सिंपल चीज़ आ जाती है. सो हाउ में हमें कितना समय लगाना है और पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना है, जितने भी पेजेस उसमें हैं, ये समझिए. अब आ जाता है आर्टिकल्स का जो टाइप होता है. तो वोकैबुलरी इज एन इशू, कंस्ट्रक्शन इज एन इशू. जो राइटिंग स्टाइल है वो आपके समझ में नहीं आ रहा है, और शब्द जो हैं जिनका प्रयोग किया गया है, द वोकैबुलरी इज डिफिकल्ट फॉर यू टू फॉलो. सो यू विल हैव टू सिट विद द डिक्शनरी. आप लोगों को एक डिक्शनरी के साथ बैठना होगा. पूरा आर्टिकल आपने पढ़ा, एक एक वो शब्द जो आपको समझ में नहीं आता उसे आपने रेखांकित किया. यू अंडरलाइन एवरी सिंगल वर्ड दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ. देन आफ्टर हैविंग फिनिश्ड द आर्टिकल, you consult the dictionary, find out the meaning of every single word,
Matter ends there, you continue. Now, I know the very idea sounds, number one, time consuming, number two, in your language, students use this word quite often, boring. But students, and I am here assuring you of this, it is nothing but a 100-day challenge. 100 दिन चुनौती के, और मैं आपके सामने हूँ. आई एम स्पीकिंग ऑन द वर्ल्ड्स मोस्ट widespread platform, that is the World Wide Web. I assure you कि 100 दिन के अंदर अंदर यदि आप इसे हर दिन पढ़ते हैं और इसी विधि से पढ़ते हैं, आपका डिक्शनरी का यूसेज विल कम डाउन टू 10 to 20%. आई कैन अश्योर यू दैट. एंड वाई? नॉट बिकॉज आई एम सेइंग इट. ऐसा नहीं है कि ये चीज मैं कह रहा हूं इसलिए होगी. ऐसा क्यों होगा? देखिए, मैंने शुरुआत में भी कहा था, हर अखबार का, हर लेखक का, जो लिखने वाले हैं, जो कॉलमनिस्ट हैं, जो न्यूज़पेपर्स में लिखते हैं, everybody has a certain style of his her own and more or less a certain vocabulary that is used. ठीक है, शब्दावली भी जो है वो मोटे तौर पर वो इस तरीके की होती है कि लिखने में वो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगे लोगों को. तो वो एक सबका, आप लोग वाकिफ होंगे कि हर एक लेखक का अपना लिखने का तरीका होता है, व्हाट वी कॉल द राइटिंग स्टाइल. चाहे हिंदी के हों, अंग्रेजी के हों, रूसी भाषा के हों, फ्रांसीसी के हों, उससे फर्क नहीं पड़ता. सो व्हाट हैपन्स इज दैट न्यूज़पेपर्स, बाय वर्च्यू ऑफ हैविंग द सेम राइटर्स, end up utilizing or using the same type of vocabulary. अब होता क्या है कि जब आप रेगुलरली किसी अखबार को पढ़ते हैं, नियमित रूप से किसी अखबार को पढ़ते हैं और नियमित रूप से उन लेखकों को पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि उनके द्वारा प्रयोग किए गए शब्द जो हैं वो धीरे 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 आपकी पहली चीज मेमोरी में बैठने लगे हैं और दूसरी चीज आपको उनका अर्थ याद होने लगा है. वाई? बाय वर्च्यू ऑफ प्रैक्टिस, बिकॉज दे आर यूजिंग इट रेगुलरली एंड यू आर रीडिंग देम रेगुलरली. तो ये बहुत साइंटिफिक चीज है, ये बहुत ज्यादा लॉजिकल चीज है. इसमें कहीं ये खोखला दावा नहीं है. आई एम नॉट सेइंग इट बिकॉज I want to test your patience for next 100 days. Nothing like that. It is a short strategy. So what is going to happen is, आप लोग जब नियमित रूप से अखबार पढ़ेंगे तो आपको न केवल जो शब्द प्रयोग में लिए जा रहे हैं, not only the words that are being used by those respective authors, by those respective writers, those who contribute in the newspapers, you'll get acquainted, you will remember them, memorize them, and also learn to use them. तो आपके आउटसाइड द न्यूज़पेपर भी बहुत काम आएंगे. आउटसाइड द न्यूज़पेपर वो किस तरीके से आपके काम आएंगे कि जब आपको कहीं और वो इस्तेमाल किए हुए दिखाई देंगे, सच एज योर आरसी पैसेजेस और एनी अदर क्वेश्चन फॉर्म, यू विल इमीडिएटली बी एबल टू आंसर देम विदाउट कंसल्टिंग द डिक्शनरी. तो ये तो रहा वोकैबुलरी का, और इसी तरह से राइटिंग स्टाइल भी हो जाता है. नाउ इफ यू रीड, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दैट 100 days for a career is nothing, but otherwise in terms of practice is a lot of time. So you are in a win-win situation. In terms of an overall career, 100 days is nothing. It's a drop in the ocean. So far as your preparation is concerned, if you put in 2.5 hours each day for 100 days, it is 250 hours of newspaper reading. And it is going to change your world, students. Trust me, आपकी दुनिया बदल जाएगी. आप लोगों को इतनी अच्छी तरीके से समझ में आने लगेगा. And the more, or let's say equally important thing is that your time of reading will come down to 1 to 1.5 hours. मैं 1 hour नहीं बोलता, क्योंकि कई बार लग जाता है समय. कुछ लोग कुदरती तौर पे तेज पढ़ते हैं, कुछ लोग धीरे पढ़ते हैं. So keeping that thing in mind, your inherent abilities, I give you about 1.5 hours each day for the newspaper. Now imagine, from 3 hours or 2.5 hours to 1.5 hours, which is about 30 to 40% of the time that you were initially putting in. और अगर आप बहुत ऑनेस्टली काम करते हैं तो 30 to 40 days में, within 30 to 40 days,
आपको अपने अंदर स्वयं ही परिवर्तन महसूस होने लगेगा. यू विल फाइंड ए सिग्निफिकेंट इफ नॉट अ रिमार्केबल विल बी 100 days, significant will be 30 to 40 days. If you start reading the newspapers starting from today, religiously, regularly, the entire newspaper spread over maybe 2, 3, 4, 5 breaks, intervals, and if you read it consecutively for 30 to 40 days, आप देखेंगे कि 30 से 40 दिन पहले जहां आपने शुरू किया था आप उससे बेहतर हैं. अब इसको भी आप कैसे इफेक्टिवली देखेंगे. ठीक है, हर चीज का हमारे पास मेजर होना चाहिए, तब तो वो बात मानने योग्य है. अगर 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 वो मेजरेबल नहीं है, अगर वो लॉजिकल नहीं है, तो फिर वो मानने योग्य नहीं है. तो एक बहुत साधारण सी चीज है. कोई भी विषय लें अपनी पसंद का, कुछ भी, माई फादर, माई मदर, माई स्कूल, माई बेस्ट फ्रेंड, माई कंट्री ऑफ माई ड्रीम्स, you talk my favorite film or my favorite sport or my favorite animal or whatever, a scary incident in my life or the accident that I saw. दुनिया का कोई भी टॉपिक आप लें और ज्यादा नहीं, लगभग 200 वर्ड्स, अबाउट 200 वर्ड्स पे उस पे बैठ के आधे से पौन घंटे में एक आर्टिकल या ऐसे लिख लें. ठीक है, और उसको रख दें. And let's say the higher side, 40 days. 40 days later, write another 200 words on the same topic and see the difference in number one, your understanding, your maturity, your treatment of the subject, the vocabulary that you use, and the construction. यदि 40 दिन बाद उसमें और उसमें फर्क है तो मेरी बात सही है, यदि नहीं है तो आप लोग खुद बेहतर जज हैं. You can decide it for yourself because you're all grown-ups. I vouch that there is going to be a remarkable difference, but then consistency, regularity is what you need. You cannot do it like this, that you don't read the newspaper for 3 days. 3 दिन का अखबार आपने नहीं पढ़ा, इकट्ठा किया और फिर तीसरे दिन या चौथे दिन आपने 3 दिन का अखबार पढ़ा. No, it is not going to. It's like nutritious food. You have to have a timing. You have to have adequate quantity. 3 बार या 2 बार समय से खाना, उचित मात्रा में खाना. चूंकि शरीर एक सिस्टम है और उसको पोषण नियमित और अच्छा भोजन देता है, ठीक उसी तरह से आपका दिमाग भी एक सिस्टम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी एक सिस्टम है. उसको नियमित रूप से पोषित करेंगे. इफ यू गोइंग टू फीड इट वेल, इफ यू गोइंग टू फीड इट विद द डिजायर्ड, द रिक्वायर्ड, I don't see why there is no chance for an improvement. The improvement is going to be significant in 40 days and remarkable in about 100 days. All right. तो हम एक बार दोहराते हैं, एक क्विक रिकैप. न्यूज़पेपर्स, टू बिगिन विथ, what is one of the most important readings for a great career is the newspaper. Why? Because it builds your speed, provides you vocabulary, helps you understanding the passages and things like that. Comprehension में सहायता करता है. It helps in construction, also improves your GK. Which newspapers to read? Any one of these 3 newspapers, you're welcome to read. इस ऑर्डर में पढ़ें तो बेहतर है. अगर हिंदू नहीं है तो इंडियन एक्सप्रेस, नहीं तो टाइम्स ऑफ इंडिया. Editorial pages are indeed important, one of the most important, but not the only important aspect. And just reading the editorial shall not help. Then how to read, इसको मैंने कहा 2, 3, 4, 5 टुकड़ों में आप बांट सकते हैं. किस तरीके से पढ़ेंगे, तो आप डिक्शनरी के साथ बैठेंगे. Initially, it's going to be a time-consuming, boring, and a cumbersome process. It's going to be taxing for you. Yet, you will need to sit down and get into the habit. देखिए, भारतीय फौज की जो ट्रेनिंग होती है वो दुनिया में सबसे शानदार ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक है. दुनिया की सबसे शानदार, सबसे मुफीद ट्रेनिंग्स में से एक है. ट्रेनिंग में भारतीय फौज का मोटो है, इनका लोगो है, मोटो है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर. शांति काल में आप जितना पसीना बहाएंगे, जितनी तैयारी करेंगे, उतना कम खून आपका युद्ध काल में बहेगा. ये आपका शांति काल है और आपका युद्ध परीक्षा में होने वाला है. आप जितना पसीना यहाँ बहाएंगे उतना ज्यादा परीक्षा में आपको फायदा मिलेगा. और द मोर यू स्वेट इन पीस the less you bleed in war. ये ख्याल रखिएगा. So the number of hours that you put in here in your studies is going to sail you through
the toughest of the competitive exams, and of course you're going to land up with a great career. Okay? सामान्य तौर पर क्या होता है, ये कहा जाता है किसी के भी द्वारा, आपके मेंटर्स हों या कहीं भी आप कोई भी किसी भी तरीके का गाइडेंस सीख करते हैं, तो जनरली ये कहा जाता है कि न्यूज़पेपर्स पढ़ने चाहिए, कौन से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या उसमें समस्याएं पेश आती हैं, किस तरीके की प्रॉब्लम्स आप लोगों को आती हैं, और केवल एडिटोरियल पढ़ने से उसमें कोई सहायता नहीं मिलती है। ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में इस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना दिया जाना चाहिए. सो हियर वी आर, I am here for you. I have been mentoring students for a long enough period now to suggest you all these points. तो अखबार आप लोगों के लिए संजीवनी का काम करेगा. ठीक है, ये इतनी ताकत रखता है कि हमारी जो भारतीय जो जनतंत्र है, जो गणतंत्र है, संविधान में हमारे 3 जो इसके स्तंभ कहे गए हैं, वो न्यायपालिका है, विधायिका है और जो कार्यपालिका है. सो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड द ब्यूरोक्रेसी, दिस लेजिस्लेचर. लेकिन इसका एक चौथा स्तंभ भी कहा जाता है और वो है मीडिया. दे से दैट इट इज ए साइलेंट पिलर ऑफ आवर डेमोक्रेसी, इनफैक्ट ऑल द डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड. सो रीडिंग, मीडिया किससे कॉन्स्टिट्यूट करता है? जो आप प्रिंट में लिखते हैं, जो आप बोलते करते हैं, उसी से कॉन्स्टिट्यूट करता है. यानी लिखने पढ़ने को इतनी महत्ता दी गई है कि उसे किसी भी स्वस्थ गणतंत्र का चौथा स्तंभ बताया गया है. और गणतंत्र में क्या हो रहा है, किस तरीके से वो काम करता है, ये अखबारों से बेहतर आपको कोई नहीं बताता. एवरी पॉसिबल वे टू, इन ऑर्डर टू बी ए गुड सिटीजन, एक अच्छा नागरिक होने के लिए, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक संभ्रांत व्यक्ति होने के लिए, आप पढ़ने लिखने से बेहतर कुछ है नहीं. देयर इज नथिंग बेटर देन रीडिंग द न्यूज़पेपर. ऑलराइट. सो पहले हिस्से में गुड रीड्स फॉर अ ग्रेट करियर, आपने देखा है और समझा है कि अखबार क्यों पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए. इसके बाद हम लोग मिलेंगे और अखबार से आगे की बात करेंगे. आज के लिए इतना. थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग. आई होप दैट माय एक्सपीरियंस contributes into your success, and I hope that it helps you in the manner desired. Wish you good luck. See you soon. Bye bye.